So you can just combine the statement. For example, there is another variable which have the 10 statements or the 12 statement or the 5 statements. So you want to add all these statements and want to combine in a particular one variable. So you have to just go this formula like that I just told you. You have to go to the transform, then compute variable, then we have give the name without any space, customer satisfaction. Just click here and drop the statement here, then you have apply plus button, then the next statement, then drop here, then apply the plus button, then S3, then click here. So drop all the statement here, whatever the statement you have related to that customer satisfaction, then click OK. We already have this, so don't need to do again. So that the customer satisfaction. So you can just also don't need to just do the coding of that which already been coded. If you want to just do the same, so you copy paste the same, it will not affect it. Okay? And you can also just apply the scale. So this the new the variable you have combined all the statement in the one variable, so it will become a one variable customer satisfaction. So how you can just apply the analysis of the variance to check the significant difference within the group or between the groups. So then the variance always be checked within the group or between the groups. So within the groups means there are the, for example, male have the two groups, or you can the male or gender is the two group, male or females, and the between the group means with the gender or the marital status or the customer satisfaction and gender, how it will be different. So in that case, you can apply the ANOVA analysis of variance where any variable have the more than the two categories. So you have to go to analyze, then you have to go the compare means, then click the one-way ANOVA, then click the one-way ANOVA, right? So in that case, you can see there is a dependent list, another is a factor. So in that case, in our current data, we want to check the impact of the demographic variables on the customer satisfaction. So which will be the dependent variable and which will be the independent variable? Tell me. We want to check the impact of the demographic variables on the customer satisfaction. So which will be the dependent variable and which will be the independent variable? Tell me. Customer independent. Customer satisfaction. Mhm. Customer satisfaction. Customer independent and Uh-huh. customer independent, demographic dependent. No, wrong. No, sir. Customer satisfaction is dependent and Yes, demographic yes. Dependent. variables are the independent. Because customer satisfaction totally depend on the various demographic variables. Depend on the gender, Variables. depend on the marital status, depend on the age group. Different age group have the different satisfaction, different gender have the different satisfaction, different marital status have the different customer the satisfaction. So in the dependent list, we have to drop the customer satisfaction here, because the customer satisfaction have the more than the two categories. In this we have the more than two categories, na? One is the, so in that case we have studied the, if you have the categorical data or continuous data, you can apply the ANOVA. Okay? One side we have the categorical data, that is the gender or the marital, another side is the interval scale, that is the continuous data, you can apply the ANOVA. So in that case, here in the factor you can put the firstly gender. Okay? So one by one we will apply, then you go to contrast, there no need to do the contrast on that. Then post-hoc, you can also apply the post-hoc to just check the Tukey or the, you can to this homogeneity. You want, if you want to check the homogeneity, then you can just stick there the Tukey or the LSD, whichever you want to check the homogeneity between the variables. homogeneity आपको check करनी तो आप ये लगा सकते हो, वरना कोई इसमें hard and fast tool नहीं कि आपको ये लगाने हैं. अगर homogeneity आपको check करनी है तो आप इसमें कर सकते हो. तो ये हमेशा जो significant level 0.05 पे रहेगा हमारा. ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसके साथ अगर शो करना चाहते हो टेबल, तो देन यू कैन अप्लाई दैट, अदरवाइज देयर नो नीड टू दैट डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी ऑलरेडी जस्ट डन इन द लास्ट टेबल्स. बिकॉज डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यू कैन जस्ट गो टू द दैट ऑब्जेक्टिव्स.
to start your objective by applying the impact or the another methods, or want to check the significant difference between the variables or within the variables. If there is such type of the objective is there, you want to check the significant difference between the variable, then you can apply for the ANOVA. Okay, so then bootstrap, they don't need to be do bootstrap. If you want to perform the bootstrapping, you can do, otherwise there is no need of that bootstrapping. Then you have to just click on that, and the ANOVA table will be generated here. You can see that here the values are given here, the sum of squares, the degree of freedom, the mean squares, and the f test is there. So you can see the significance is the 0.48. So it is more than the 5% level of significance. It means there is no significant difference between the groups or the within the groups. Between the groups, which you have to take in the customer satisfaction and the gender. So there is no significant difference across the gender regarding the customer satisfaction, because the significance level is more than the 0.05. So there is no significant difference. So our null hypothesis has been accepted in that case. So you can also do the next analysis. You want to save that output, you can also save the output after this is generating the whole table. You can also save the output. Then you have to go to analyze again, then compare means, go to One-Way ANOVA. Next at that time we have to be just check the variance between the marital status and the customer satisfaction. So you can drop here the marital status, then okay. The next is also showing the non-significant because the value is 0.2, so it is more than the 0.05. So you can see it also not showing the significant difference between the all the across the marital status regarding the customer satisfaction, कि कोई significant difference नहीं है उसके satisfaction में. जो significant आपका जो age group में across the all the marital से, whether the married or unmarried, they are thinking the same. They are not thinking the rationally, they are not thinking different, their opinion are the same. There is no significant difference between the both. So the null hypothesis has been accepted. In the next case, just go to the analyze, the same, the compare means, the one-way ANOVA. Next time you can just drop here the age, click again. You can see that is the so ANOVA. So yeah, this value is also showing the 0.418. So it's showing that not significant. There is no significant difference across the different age group regarding the customer satisfaction. It means all the persons, all the respondents in all the age groups are having the same level of the satisfaction. They don't have the different type of the satisfaction. So there is no significance. So we can say that null hypothesis has been rejected in that case. So you can just interpret these tables in this way. So this is the way through which you can just analyze the variance between the variables or within the variables. Clear? So you can also do the univariate analysis if you want to do univariate. So univariate in that case, if you have the dependent variable, the random factors, and also the covariates, you could also apply the covariates or the random factor there. So in the fixed case, in that case, I just telling थोड़ा सा briefly मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट आप करते हैं. यूनिवेरिएट में क्या होता है, जब आपके पास जो एक ही वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और फिक्स फैक्टर आपके पास है और एक आपका रैंडम है. रैंडम अगर लगा सकते हो, लगाना चाहो तो. नहीं तो डिपेंडेंट में मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे. डिपेंडेंट में इसको करो आप
ये आपके पास, अगर आपके पास जो डिफरेंट एक से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो एक साथ आप कोई का फिक्स फैक्टर में कर सकते हो। वहाँ पे हम अनोवा में 1 बाय 1 फैक्टर कर रहे थे, हम के साथ हम चेक कर रहे थे अनोवा। बट यूनिवेरिएट में क्या है, आपके पास एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसमें आप एक साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सारे के सारे आप एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। मॉडल में जाके आप देख सकते हो, फुल फैक्टोरियल करना चाहते हो या बिल्ड टर्म्स करना चाहते हो, तो मोस्टली आप फुल फैक्टोरियल पे हम करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर कितना करना चाहते हो, 2 या 3, तो सम ऑफ स्क्वायर भी यहाँ देख सकते हो। कितनी बार सम ऑफ स्क्वायर, जितना सम ऑफ स्क्वायर करोगे उतनी वैल्यू इसकी कम आती जाती है। इसमें पोस्ट होक लगाना चाहते हो तो पोस्ट होक भी लगा सकते हो, इसमें जेंडर मैरिटल स्टेटस पे अगर इसमें कर सकते हो, करना चाहते हो तो एलएसडी कर सकते हो इसमें, टुकी। ये दो ही है थोड़ा सा जो फेमस है, जो आपको होमोजेनिटी आपको चेक करते हैं। ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या होमोजेनिटी, हाँ होमोजेनिटी टेस्ट आप, मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कर सकते हो। तो होमोजेनिटी टेस्ट में हमने 2 सेलेक्ट किए थे, 2 टेस्ट में अलग अलग होमोजेनिटी बताएगा। एफ टेस्ट लगाना चाहते हो तो एफ टेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो इसमें, साथ के साथ अगर एफ टेस्ट आपका चेक करना चाहते हो तो उसमें भी चेक कर सकते हो एफ टेस्ट। ओके, अब देखो ये तो सब्जेक्टिव मींस फैक्टर आ गए कि आपका नंबर ऑफ दो मेल हैं, ये फीमेल कितने हैं, तो ये तो आपका नंबर टोटल बता देगा कितने मेल है कितने फीमेल्स हैं। तो इसमें ये कैटेगरी वाइज आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब एप टेस्ट फिर जो हेटेरोस्केडेसिटी के लिए हमने या होमोजेनिटी के लिए निकाला था, तो इसमें कह रहा है कि कोई इसमें जो है वो हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस को हमने इसमें चेक किया है। तो इसमें क्या, इसमें भी ये नॉन सिग्निफिकेंट दिखा रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, हेटेरोजेनिटी इसमें है, होमोजेनिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। और टेस्ट ऑफ, ये वाली दैट इज द टेबल इज द मोर इम्पोर्टेंट। बट इसके अंदर देखो कुछ ना कुछ इसमें पूरा का पूरा ये कैलकुलेट नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें एफ वैल्यू भी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी नहीं आ रही, क्योंकि डाटा हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। फुल डाटा आपके पास होगा पूरा डिटेल में, क्योंकि आप हमारे पास सिर्फ 10 का सैंपल है, तो 10 के सैंपल पे ये नहीं पॉसिबल होता है। कम से कम 30 का सैंपल होना चाहिए, 30 या उससे ज़्यादा का सैंपल होना चाहिए, फिर आपके पास एफ टेस्ट या सिग्निफिकेंस लेवल भी निकल के आएगा सारा का सारा इसमें। तो इसमें देखो जेंडर और मैरिटल स्टेटस का भी आ जाएगा इसमें। अब इसमें ये देखो जेंडर और मैरिटल स्टेटस का भी इसमें बता देगा आपको कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं। एफ की वैल्यू ये यहाँ पे तब आएगी जब आपका डाटा सैंपल साइज आप इंक्रीज करोगे थोड़ा सा। फिर जेंडर और एज के ग्रुप में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर मैरिटल स्टेटस और एज इन ईयर, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस और एज इन ईयर तीनों का बता देगा, तीनों के बीच में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये इस तरह से आपका क्रॉस जो एग्जामिनेशन कर सकते हो, या एक चेक कर सकते हो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कितना डिफरेंस है, क्या वेरिएंस है। तो वेरिएंस इसमें चेक कर सकते हो कि आपस में वेरिएबल्स के बिटवीन कितना वेरिएंस है। तो एक साथ इसमें सारा कर सकते हो। इसमें इसका जेंडर का अलग हो गया, मैरिटल स्टेटस का अलग, एज का अलग, फिर जेंडर का मैरिटल का हो गया, जेंडर का एज का हो गया, फिर मैरिटल स्टेटस और एज का हो गया, फिर जेंडर मैरिटल स्टेटस। तो इस तरह से आप इसमें जो यूनिवेरिएट एनालिसिस लगा सकते हो, जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक से ज़्यादा हो। तो आप इसमें होमोजेनिटी भी आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो होमोजेनिटी है नहीं, तो सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 से ज़्यादा, तो होमोजेनिटी इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से अब टेबल निकल के आएगी, ये जो आपकी जो यूनिवेरिएट टेबल है ये वाली। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू भी आ जाएगी, सिग्निफिकेंस वैल्यू भी आ जाएगी। तो इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हो जिसमें भी अपना सिग्निफिकेंट लग रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में वेरिएंस है या वेरिएबिलिटी कितनी है, वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे टाइप 3 सम ऑफ स्क्वायर कर सकते हो या टाइप 2 सम ऑफ स्क्वायर कर सकते हो, बट हम टाइप 3 सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं मोस्टली यहाँ पे। तो इस तरह से आप यूनिवेरिएट एनालिसिस भी कर सकते हो और अनोवा भी लगा सकते हो इसके अंदर। अनोवा तब लगाओ जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो गया तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस पे चले जाओ। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है, तब आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे जा सकते हो। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का मैं कल बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir.
कुछ और पूछना तो बताओ। सर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बता दीजिए। टाइप 1 टाइप 2 एरर का ये थ्योरेटिकल ज़्यादा होगी, वो जब मैं हाइपोथेसिस का करवाऊंगा ना तब बताऊंगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर। देखो टाइप 1 एरर में ये है, मान लो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू कितनी है 0.04 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे क्या होना है, एक्सेप्ट होना है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि 0.05 से ज़्यादा है। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होना है, यहाँ पे एक्सेप्ट होना है। और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट है फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो कौन सी होगी, टाइप 1 एरर। कौन सी होगी, टाइप 1 एरर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अगर आए 0.05 से कम है तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होना है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो होगी टाइप 2 एरर। क्लियर। अगर यहाँ पे वैल्यू 0.05 से कम होती वैल्यू, तो हम क्या कहते हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना था, लेकिन नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो टाइप 2 एरर हो गई। टाइप 1 एरर क्या होगी, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारे केस में 0.05 से ज़्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, लेकिन एक्सेप्ट करने की बजाय हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो टाइप 1 एरर होगी। क्लियर। ओके सर।